Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Girls and my boys too. You know that we were discussing the theory of existentialism, and previously we discussed this theory with reference to education. But now we are going to discuss this theory with reference to, generally, and with reference to, you may say that. Literature or something like this. So, philosophical theory or approach that emphasizes the existence of the individual person as a free and responsible agent, determining their own development through acts of the will. तो जो existentialism की theory है बेटा, ये emphasize करती है, जोर देती है कि जो individual person है ना, वो free है और वो responsible है अपनी development का। मतलब उसके पास जो है वो हर चीज का इख्तियार है कि वो कैसे लाइफ गुजारना चाहता है। अगर वो अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है तो ही विल हैव टू स्ट्रगल, ठीक है। और अगर जो है वो ही वांट टू बी द सेम, तो मतलब इट होली डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ठीक है जी। History. So existentialism became popular in most world war years as a way for humans to reassert the importance of individuality and freedom. तो I told you कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखी लोगों ने, और इतना कुछ बेयर करने के बाद they were suffering with the view that there is no purpose of their existence in this world, and they can't do anything because there is some outside force who is controlling them, and that force should do something for them. और इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको वेटिंग फॉर गोडो की दी थी कि उसमें जो है वो विद रेफरेंस टू लिटरेचर के उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, टू कैरेक्टर्स देयर आर, और वो भी जो है वो दे आर लाइक सफरिंग विद द यू नो loneliness and anxiety, depression, और purposelessness, ठीक है, meaninglessness of their lives, or they just wait for the god or the godo. We just assume this is the reference towards the godo. Godo was a reference towards god, that he will come and he will rescue them. Existentialism says that people or human beings are themselves responsible for their acts, and they have the freedom to do whatever they want, and they should do something for themselves. G. So became a well-known philosophical and cultural movement from 1930s to 1970s. ये आपको पता होना चाहिए. Existential themes have been discussed throughout philosophy and literature. Socrates, be true to thyself. Be true to yourself. ठीक है जी. No, it's old English. Okay. Then existentialist में आ जाता है जी सोरेन केकरगार्ड आ जाता है, viewed as a father of existentialism. तो आपको पता होना चाहिए कि जो केकरगार्ड है, he was the father of existentialism. He felt individual was responsible for giving life meaning and living that life passionately. ये whatever the type of life you are living, उसका कहना था कि जिस तरह की भी जिंदगी आप गुजार रहे हैं ना, वो आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल हैं. अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहें, आप अपने लिए कुछ करना चाहें, तो आप कर सकते हैं. तो अगर आपकी लाइफ मीनिंगलेस है, तो इट्स होली बिकॉज ऑफ यू, ठीक है. नो अदर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. It focuses on subjective experiences of human beings rather than the objective truths provided by math or science. Okay, it is said that this is somewhat concerned with the objective experiences, because man himself is responsible for whatever he is going through in his or her life. Okay. Jane Paul जो साठ है, इनका भी हम पढ़ेंगे. In 1945 adopted existential term to describe his philosophy. A major concept of his philosophy was freedom and responsibility. Freedom of man, and whatever sort of the life they are living, they are actually responsible for them because they have the freedom. Nobody is controlling them, and nobody is, putting a hindrance in their ways to not to do anything for their own selves. Okay.
But the force by the god, or the force that is having the reference towards god, this is something else. But it is considered, according to existentialism, human beings are responsible because they have the freedom and they can do whatever they want to. They have the responsibility. If they want to make their lives better, they can do it. Man first of all exists, encounters himself, surges up in the world, and defines himself afterward. So he just having of the view that he exists, man exists, encounters, then he just defines himself afterward, that who is that person, मतलब who is he actually. अगर आप बिल्कुल फारिग हैं, जैसे वेटिंग फॉर गोडो में two characters, they were doing nothing. They had the chance, they could make their lives better, but still they did not. So the thing is that you define yourself by your acts, by your struggles, by your passion, by your whatever, everything. Okay? Existentialism is living. So the search for meaning is existentialism, is the search for self. If you are searching for meaning, it means that you are searching for your own self. You're searching for self. ठीक है? आपको मैंने बताया कि क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जो है वो उसकी वजह से people just started considering that there is no purpose of their lives, and when the outside force is controlling them, and you know uh, it is they just go destroyed, और उन्होंने कितना कुछ सफ़र किया. तो इन सब चीज़ों के बाद जो है वो एक जो एक सेंस ऑफ लॉनलीनेस, सेंस ऑफ जो डेप्रिवेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था उस टाइम पीरियड में. Existentialism is not dark, so it is not depressing. It is about life. Existentialists believe in living and in fighting for life. Existentialists ये नहीं कहते कि you should be depressed and all because you have the responsibility, you have the freedom. मतलब जो हो रहा है बस मतलब ठीक है जैसे, no. वो कहते हैं कि you have the freedom, so you are responsible for your own self. You are responsible for your life that you are having. ठीक है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के. जब जब आपको फ्रीडम दे दी गई है, तो आप अपनी लाइफ को बेहतर भी तो बना सकते हैं ना, मीनिंग भी तो ला सकते हैं ना, अपनी लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स दैट if there are some of the circumstances that are against you, then you will have to fight for your life. Okay, so this is existentialism's philosophy. Camus, Sartre, and even Nice were involved in various wars because they believed. So Nice को आपकी course outline में, with reference to your course outline, we will discuss जो है वो his view actually on existentialism. They were involved in various wars because they believed passionately in fighting for the survival of their nations and people. So they were of the view that the people should try to fight, rather they should fight passionately for their survival, for the survival of their nation, for the survival of their people. उनको खुद स्ट्रगल करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन के टाइम से भी गुजरे हैं वर्ल्ड वॉर के बाद. So this was the basic reason. So the politics of existentialists varies, but each seeks the most individual freedom for people within a society. So, but there is one thing common in all of the views of these philosophers, that they considered or they gave importance to individual freedom. Okay, they are responsible. Carol Jaspers, he was having the philosophy. Existence philosophy is the way of thought by means of which a man seeks to become himself. वो खुद वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में, वो क्या बनना चाहता है. It is wholly dependent on the person. If he wants to live a good and comfortable life, he will have to struggle for that. But if he is just sitting silent and waiting for some outside force to come and rescue them and to come and do the things for them, so it is going to again have more discussion. The more the pain, the more the tensions, the anxieties, the depression. ठीक है, तो
what they should do is they should do something for their own selves. The three writers who appear invariably on every list of existentialists, Jaspers, Herger, Sartre, are not agreement on essentials. Okay? By the time we consider adding Reich, Kafka, and Camus, it becomes plain that one essential feature shared by all these men is individualism. तो ये सबने जो भी उनके कुछ डिफरेंट व्यूज थे थोड़े से या कुछ भी था, लेकिन वन थिंग वाज कॉमन इन देम, इन ऑल ऑफ देम, और वो चीज थी इंडिविजुअलिज्म. दे ऑल वर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअलिज्म. ठीक है जी. Existentialism focuses on conditions of a human existence, emotions, actions, responsibilities, thoughts, meaning और purpose of life. यही मैंने आपको बताया था कि उनकी emotions अगर if they are feeling so, they can try to make themselves feel better. They can control on their emotions. अगर वर्ल्ड वॉर के बाद डिस्ट्रक्शन आई थी, ऑफ कोर्स हैविंग पेशेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑफ द यूनिवर्स. तो सब्र बहुत मुश्किल होता है, बट द थिंग इज के दे व्हेन दे नो दैट now they can do anything regarding this, जो होना था हो गया. Now they should do something for to you know make themselves or to make their lives better. ठीक है, तो वो उनको करना पड़ेगा उसके लिए. एक्शंस, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस. उन्हें अगर वो अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं तो वो उनको कुछ कुछ अच्छा करें, दे विल डू इट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. अगर अभी जैसे वेटिंग फॉर गोडो में जो कैरेक्टर्स थे ना, वो कुछ भी नहीं करते थे, आके बैठ के बस वेट जो है ना गोडो का वेट करते रहते थे, और उसके बाद कहते थे वो नहीं आया और चले जाते थे. फिर अगले दिन दे रिपीटिंगली दे वर डूइंग द सेम थिंग्स but without any purpose. Why are you waiting for some outside force to come and do something for you? Nobody will do it. But that reference was towards God. People say, people just assume this, although it is not clearly visible or clearly written in anywhere कि जो है वो ये गॉड की तरफ था. थॉट्स, ठीक है, उसकी अपनी थॉट्स हैं जो दैट गुड थॉट्स लीड टू हैप्पी इमोशंस. ठीक है, और थॉट्स इफ दे आर लाइक यू नो हेल्पलेसनेस है, रेस्टलेसनेस है, आप मतलब एक ही बात पे सोच रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट विल यू नो put a bad influence on your emotions. Meaning or purpose of life, man is having the opportunity, having the freedom to give purpose and to give meaning to their lives. Okay, they are having the freedom there because there is individualism कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इंडिविजुअलिटी है, उनके पास फ्री विल है, उनकी अपनी मर्जी है. वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहें तो बेहतर बना सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर जैसी हैं फिर. अच्छा जी, द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ existentialism are simply mankind has free will. उसके पास फ्री विल है, वो जो चाहे कर सकता है. लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस क्रिएटिंग स्ट्रेस. लाइफ में बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं. इट क्रिएट्स स्ट्रेस, आई मीन which way you should go. Few decisions are without any negative consequences. You should take some of the decisions without thinking anything negative about the consequences of your decision. It can be good also. The consequences can be good also. So some things are irrational or absurd without explanation. There are some of the things that are absurd, that are irrational, but you have to accept them to some extent if there are some of the things existing. ठीक है, जैसे हमारे साथ ही क्यों हुआ, या मैं ही क्यों, why? So you should, some of the things that are absurd, if one makes a decision, he or she must follow through, अगर decision ले लिया तो you should work accordingly then. Existentialism, broadly defined, is a set of philosophical systems concerned with free will, choice, and personal responsibility.
आपके पास फ्री विल है, आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, आपके पास चॉइसेस हैं टू गो दिस वे और द अदर वन। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आपके एक्शंस के लिए यू विल बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू हैव द फ्रीडम, यू हैव द फ्री विल, यू हैव द चॉइसेस। ठीक है जी, बिकॉज वी मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स एंड बायसेस। दोज चॉइसेस आर यूनिक टू अस एंड मेड विदाउट एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रुथ। यस, तो आपके बिलीव्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके बायसेस आपकी चॉइसेस बनाती हैं। जैसे मुझे अगर लगता है मेरा एक्सपीरियंस किसी चीज के साथ बुरा रहा, तो आई वोंट ऑप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग वंस अगेन फॉर माई सेल्फ। So this is basically the reason. There are no universal guidelines for most decisions. तो कोई भी जो यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं वो नहीं है। हाँ, बस ये है कि when there is some chance that you can either you should pick or go towards evil or good, so you should opt the way that is good. ठीक है, and there are some of the things related to this कि what are the reasons behind, तो ये भी आपको ही डिसाइड करना है। So even trusting science is often a leap of faith. उनको भी मतलब they need to do it. The existentialists conclude that human choice is subjective. वो जो करते, जो उनकी जो choices होती हैं, जो उनके ideas होते हैं, उनकी thoughts होती हैं, वो subjective होती हैं. Individuals must make their own choices without help from such external standards as law, ethical rules or traditions. Individualism है ना बेटा, individualism का मतलब ये है कि you can do whatever you want to, whether it's good or bad. आपको सही लग रहा है तो आप करें, और आपने करना है तो आप करें। It doesn't matter whether it is considered जो है वो unlawful, or it is considered unethical, it is considered untraditional. No, ठीक है, तो the person has the free will, because individuals must make their own choices. They are free, but because they freely choose, they are completely responsible for their choices. तो जाहिर है अगर उनके पास फ्री विल है, वो खुद चूज कर रहे हैं अपने लिए, तो obviously they will be responsible for whatever happens later on in the future. Whatever the consequences will be, they will have to accept them with open heart. ठीक है भाई, मैंने ही किया था, आपको मुआवजा भी मैंने ही भुगतना है। ठीक है, something like this. So the existentialists emphasize that freedom is necessarily accompanied by responsibility. ठीक है, existentialists कहते हैं कि जो freedom है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। जाहिर है, यू हैव द फ्रीडम, इफ यू हैव द फ्रीडम, देन वट एवर यू विल डू, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो भाई आपने खुद ही किया था ना, किसी ने फोर्स तो नहीं किया था। Condemning to be free, since individuals are forced to choose for themselves, they have their freedom and therefore their responsibility. Trust upon them. Yes, because if they are free, they have the freedom to choose, then they should be trusted कि जो है वो whatever the decision they will take, obviously they will take into account certain uh, you know things that can happen, or that can lead towards certain consequences. So whatever you should do, obviously if a person is going to take the decision, he is going to take into account all the other factors also, in order to know कि ये in future मतलब क्या होगा, कि consider सही होगा नहीं होगा, so something like this. For existentialism, responsibility is the dark side of freedom. Yes, responsibility जो है वो dark side है ना, कि freedom तो दे दी, अब कुछ गलत होगा तो responsibility भी मुझे दे दी। ठीक है, if I do something, I have the freedom, the way हमारे parents करते हैं ना, उन्होंने हमें free will दी हुई है, freedom दी हुई है, but at the same time ये भी है हमें कि अगर हमें freedom मिली हुई है, तो इसकी responsibility, अगर हमने कुछ गलत decision लिया तो वो भी हम पे of course आएगी। So it is a hindrance towards, or in taking up the decision that is very fine to you, but it can have some negative consequences now. Negative things can also happen. So the realization that one is completely responsible for the decisions, actions and beliefs can lead to acute and anxiety. हाँ यार, फ्री विल तो मिल गई, फ्रीडम तो मिल गई, इंडिविजुअलिज्म भी है, मैं जो करना चाहूँ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, पर अगर मैंने ये किया तो ये होगा, और सबने मुझे कहना है तुमने खुद ही किया था।
होता है ना, ये हो गया वो हो गया, तो हमने कौन सा तुम्हें कहा था करने के लिए, खुद ही किया था ना. So this is the thing that is, creating acute anxiety. So the existentialists criticize flight from freedom and responsibility as self-deception. So individuals must accept full responsibilities or responsibility for their behavior, no matter how difficult it is. जितना भी डिफिकल्ट है फिर उठाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग का जिक्र रखते हैं, तो फिर आपको जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए. To live meaningfully and authentically, you must become fully aware of the true character of the human situation and bravely accept it. तो ठीक है, आपको अगर मीनिंगफुली आप जीना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये सिचुएशन में ये करेंगे तो इससे क्या हो सकता है. ठीक है, एंड देन you will have to bravely accept it. ठीक है, once you are done with your decision. अच्छा जी, beliefs of existentialists. Existence precedes essence. Human essence is determined through life choices. जो भी आपकी लाइफ में होगा वो डिटरमिन है कि आपने चॉइसेस कौन सी की थी. Tragic experiences of or inside moments can cause humans to question meaning of life. तो जो insightful movements हैं, tragic experiences हैं, तो वो humans को उनकी जिंदगी का क्या मकसद है उसको क्वेश्चन कर देती हैं sometimes. कि मतलब why this? We make pillars in our identity. Basing one's identity solely on a pillar with a condition can lead to living in despair. So philosophy encourages preservation in spite of absurdity. तो philosophy encourage करती है preservation को, कि you are preserved to some extent. Absurdity नहीं है, कि you have the free will ना, you have the chance to take decision for your own self. तो आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं. तो ये तो अच्छा है ना, बट वो डर लगता है ना कि फिर जो होगा करने से पहले जो होगा देखा जाएगा, और फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता. तो एटलीस्ट इतना सा करें जब हो तो देखा भी जाए. ठीक है, this is a funny sort of the thing. Okay जी, so beliefs of existentialists, again, human beings create their own values through choice. These values help them create a meaning for their life. Their identity is defined by actions and their responsibility for those actions. तो वो उनकी जो पर्सन की जो आइडेंटिटी होती है ना ह्यूमन बींग्स की, कि वो क्या है, वो डिफाइन की जाती है कि वो करते क्या है, मतलब किस तरह के कामों में वो इन्वॉल्व है. ठीक है, और फिर जो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनके ऊपर आती है उन्हीं एक्शंस की. तो जो आप करते हैं ना वो आप बन जाते हैं. ठीक है, इफ यू आर डूइंग गुड यू विल बिकम गुड. इफ यू आर following the rules, automatically you will become the person who is lawful or respecting law or something like this. Humans have freedom, but with that freedom comes the responsibility. We have to make choices. देखा, फ्री विल तो दे दी, फ्रीडम तो दे दी. वही जिस तरह से I always whenever someone asks me कि uh, when I was in my metric, so in my ninth class, so I had the phone, my personal one. So I just always say one thing, that our parents, they just give us the freedom, but at the same time they just give us the responsibility of if ever something bad happens. ठीक है, तो द थिंग इज कि जो आपकी फ्री विल है ना, या आपको फ्री विल ही तो आपकी जो हिंड्रेंस है एक टेकिंग बैड डिसीजंस और टेकिंग हॉरिबल सॉर्ट ऑफ द डिसीजंस इन लाइफ, वो एक हिंड्रेंस होती है आपकी, जो मतलब आप नहीं कर सकते ये, बिकॉज यू विल बी कंसिडर्ड द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस. सो ईच चॉइस कैन लीड टू अ सक्सेस और अ फेलियर. जो भी आपने चॉइस की है, ली है, कुछ भी आपने किया है, whatever the action you took place, whether it's good or bad, तो या तो उसमें कामयाबी होगी या नाकामी होगी. कामयाबी होगी तो everybody will say that this was her decision and she just did it. और if failure हुई तो आपको you better know that.
कि उसके बाद में एवरीबडी इज गोइंग टू से कि हमने कौन सा किया था, तुम खुद ही किया है ना, ठीक है। Humans take a leap of faith that no matter the outcome, success or failure, they will make it. वो कहते हैं ठीक है भाई, देख लेंगे जो होगा. So we live in angst and we have no one to blame for our choices but ourselves. किसके ऊपर डालेंगे कि मैंने I'm not responsible for that. Although I took the decision, nobody is going to take the responsibility of your actions. Rather, you will have to take it. So this responsibility can lead to dread and anxiety over choosing. तो बेटा मैं यहाँ पे कनेक्ट करती जाऊँ कि एजुकेशन में हमने पढ़ा था जो कि existentialism से related कि they have the free will to decide about their future. They should have the free will वो क्या पढ़ना चाहते हैं. They must have the free will of the choices or of the profession of the field they want to choose for themselves. So this is, and they will be later on responsible for that also. So if you choose not to make a choice, you are not living authentically. अब ये देख लो जरा, ये भी कह दिया कि अगर आप अपनी चॉइसेस खुद नहीं लेते, आप चूज करते हो कि यू वॉन्ट मेक योर चॉइसेस. जैसे मम्मा आप बताएं whether I should do it or not. बाबा से मशवरा कर लिया, बहन भाइयों से कर लिया, तो उसने कहा इट मींस दैट यू आर नॉट लिविंग ऑथेंटिकली. तो मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी में तो फिर to some extent we are not living authentically because there is no individualism. We can't take our decision, although we have the opportunity, although we have the freedom to take them. Parents कहते हैं ना जैसे लगता है देख लो कर लो, फिर भी हम डरते हैं and we just say कि request them कि please you just suggest us what we should do. So this is the thing. So limitation and condition of our freedom is our facticity or made of not being. Our past it consists of things one can't choose, birthplace or parents. ये तो हम change नहीं कर सकते ना. And we depend on values we develop in our past. जो values हमारी होती हैं, उन्हीं के ऊपर हम rely कर रहे होते हैं, depend कर रहे होते हैं. So we are a part of our past, present and future itself. हम इन तीनों चीजों को जो है ना इसके ऊपर depend कर रहे होते हैं. Past आपका क्या था, it is having the influence on your personality. आपका present क्या है और आपका future क्या होगा. So no one self lives independently. आप independently तो नहीं रह रहे ना. आपने present में कोई decision लिया तो आप कैसे इस तरह से independent है that you will not take the responsibility of what you did in future. ठीक है जी. Existentialism does not support any of the following. क्या नहीं कहता. The good life is one of the wealth, pleasure or honor. वो ये नहीं कहता कि जो गुड लाइफ है वो तभी है अगर आपकी लाइफ में जो है वो प्लेजर है, अगर आपकी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा वेल्थ है आपके पास, तो बहुत ज़्यादा ऑनर है. एग्जिस्टेंशियलिज्म ये नहीं कहती. सोशल अप्रूवल एंड सोशल स्ट्रक्चर ट्रम्प द इंडिविजुअल. वो ऑफ कोर्स सोशल स्ट्रक्चर जो है वो सोशल अप्रूवल वो it just puts the interest in a person's way. Accept what is and that is enough in life. आप एक्सेप्ट करें कि जो है वो जो भी कुछ है और वो इनफ होता है. जरूर ये भी नहीं है इसमें, ठीक है. साइंस कैन एंड विल मेक एवरीथिंग बेटर. साइंस जो है वो कर सकती है और कर देगी सब कुछ बेहतर. नहीं, ये इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करती. पीपल आर गुड बाय नेचर, रूइंड बाय सोसाइटी एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. के लोग बाय नेचर तो अच्छे हैं लेकिन सोसाइटी और सब एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं, सुपर नेचुरल फोर्सेस, वो उसके साथ बुरा करती, वो मतलब वो उसको रुइन करती हैं. तो इस आइडिया को भी सपोर्ट नहीं करती एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी. वो कहती है आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. अब बिकॉज आपको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपके पास इंडिविजुअलिज्म है, फ्री विल है टू मेक द चॉइसेस, टू डू व्हाटएवर यू वांट टू इन योर लाइफ, तो फिर आप खुद ही करें ना. Franz Kafka, absurdist Jewish था, similar to Camus art in depictions of cruel fate. कहते थे fate बहुत cruel है और we are not responsible of whatever happened, क्योंकि fate में तो लिखा हुआ था वो तो.
Kafka presents a world that is at once real and dreamlike, and in which individuals burdened with guilt, isolation, and anxiety make a futile search for personal salvation. तो यहाँ बंदे ने कहा कि काफका का व्यू था कि ये लाइफ जो है वो रियल भी है, एक तरफ रियल है, दूसरी तरफ ड्रीम लाइक है, और इंडिविजुअल्स जो है ना वो बर्डन होते हैं गिल्ट से, आइसोलेशन से। जाहिर है आपको गिल्ट, आप इसलिए नहीं ना लेते कोई ऐसा डिसीजन कि आप कहते हैं मुझे गिल्ट ना हो बाद में, तो वो यू आर बर्डनाइज्ड विद देम, आइसोलेशन है, लोनलीनेस है, एंजाइटी है, तो वो इट मेक्स अ फ्यूटाइल सर्च फॉर पर्सनल साल्वेशन कि मैं इसमें कहाँ जाऊँ, मुझे क्या करना चाहिए। एल्बर्ट कैमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट, absurdist और एथिस्ट भी था। एथिस्ट इज द वन, absurdist वही हो गया ना जो कि बिलीव करता है कि जो the things are not clear, they are absurd, और लाइक जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं वो भी दे आर कंसीडर्ड टू सम what to some extent absurdist also. Atheist वो तो वो होता है that does not believe in any god, वो किसी गॉड पे बिलीव नहीं करता। French resistance member during World War II brought humanism to the existentialism. वो humanism लाया था his belief that man's condition is absurd, identified with him with the existentialist, but he denied, there are some of the, um, things, there are some of the allegations you may say to that group. His works express rather a courageous humanism, and he was of the view that humanism should always be taken into account, and this is what matters. So the characters in his novels and plays, although keenly aware of the meaninglessness of the human condition, assert their humanity by rebelling against their circumstances. मैंने कहा रिबेल कर दें, कैरेक्टर्स जो उसके नॉवेल्स और प्लेज में दिखाए जाते हैं वो ये है कि उनको पता है कि मीनिंगलेसनेस है ह्यूमन की कंडीशन की, फिर भी वो ह्यूमैनिटी को करता है फोर्स, और ह्यूमैनिटी को एजर्ट करता है, और वो कहता है कि पीपल शुड, यू नो दे शुड रिबेल अगेंस्ट सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है। Camus marks the finale of existentialism, an attempt to move beyond what Sartre had defined. Camus cannot be called an existentialist, but his ideas evolved alongside those Sartre and existentialism. तो कह नहीं सकते, लेकिन उसके जो आइडियाज इवॉल्व हुए थे वो कीपिंग इन व्यू दीज सर्कमस्टांसेस हुए थे, तो इसलिए हम जब उसका नाम लेते हैं। ओके जी, so this was all for today.